So every time we write the answer, any answer, we should calculate that what we have to write down. It is not only about reading the question and start writing. तो बेटा क्वेश्चन है, व्हाट वाज सीजर्स रिएक्शन टू द सूटसेयर्स वार्निंग. ये वाला क्वेश्चन कि सीजर का रिएक्शन क्या था सूटसेयर की वार्निंग सुनने के बाद. व्हाट लाइट डज हिज रिएक्शन थ्रो ऑन सीजर्स कैरेक्टर. और सीजर के कैरेक्टर के बारे में हमें क्या मालूम चलता है उसका रिएक्शन देख करके. इन दोनों क्वेश्चंस को मिला करके बेटा इन्होंने 3 मार्क्स का क्वेश्चन देना है ये. तो आप हम व्हाट वाज सीजर्स रिएक्शन 1 मार्क का, सीजर का रिएक्शन बताएंगे क्या था, वो 1 मार्क का है. और बेटा उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स 2 बताएंगे क्योंकि वो 2 मार्क्स का है. तो हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो 2 हो जाएंगी और रिएक्शन 1 मार्क के हिसाब से लिखेंगे. 1 मार्क के हिसाब से लिखने का मतलब हो गया दैट वी विल राइट डाउन 1 or 2 sentences, and for characteristics we are writing as per 2 mark question, मतलब 3 or 4 sentences. Now let us write down सीजर का रिएक्शन क्या था बेटा. सीजर completely ignored the warning given by the soothsayer. Caesar completely ignored the warning given by the soothsayer. Full stop. He asked his procession to move. Full stop. This is because, और ऐसा क्यों किया? This is because he was not at all impressed by his looks and declared him to be a daydreamer. He was not at all impressed by him. बेटा फिर हमने लिखा this is because he thought him to be a daydreamer and declared him to be a daydreamer. He asked his procession to move. अब हमें लिखना है what light his reaction threw on Caesar's character. जब एग्जाम में लिखोगे, जब रजिस्टर में लिखोगे तो हाँ बेटा. Ma'am, please tell me what we are doing. Ma'am, actually, I did not see the message to join the class. 41 page of the workbook and the second part वो question लिखवा रही हूँ. I am recording the class. I will share it with you. अब बेटा what light does his reaction में अब हमें जब लिखना है second part of the same question, it is better to write in second line. एक नई लाइन से स्टार्ट करना चाहिए सेकंड पार्ट. और बेटा अभी अगर वर्कबुक में आप आंसर लिख रहे हो तो फिर आपके पास स्पेस नहीं है, इसलिए आप उसको नहीं लिखोगे सेकंड लाइन में, आप उसके आगे ही लिखो. पर हम हमेशा अपने आंसर्स के मेन पॉइंट्स जो है उसको अंडरलाइन कर देते हैं. अब बेटा इसमें लिखो वी अंडरस्टैंड that Caesar is misled by the appearances. उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या पता चलती है बेटा, इसलिए हमने लिखा this shows that
Caesar is misled by appearances. Full stop. He is unable, he is unable to evaluate, he is unable to evaluate the the worth the worth or knowledge of the person. He is unable to evaluate the worth or knowledge of the person. Full stop. Secondly, एक और कैरेक्टरिस्टिक पता चली. Secondly, comma, he is an arrogant self. He is an arrogant self. Full stop. He is overconfident. He is overconfident, which makes him a little careless. Which makes him a little careless. बेटा हाईलाइट करो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स. एरोगेंट, ओवर कॉन्फिडेंट, केयरलेस, मिसलेड बाय अपीयरेंस. मिसलेड बाय अपीयरेंस बेटा एरोगेंट सेल्फ, ओवर कॉन्फिडेंट, केयरलेस. और पहले वाले पार्ट में बेटा इग्नोर्ड हिम अंडरलाइन करो, और बेटा आस्क्ड हिज प्रोसेशन टू मूव वो आप हाईलाइट करें. asked his procession to move, आप वो हाईलाइट करें. आज भी बेटा मैंने आपको नोट्स शेयर करे हैं, और कल तो हमने करे ही थे. तो आज जो पीडीएफ भेजा है वो खोलो, और आज आ जाओ बेटा 5th पेज पर. 5th पेज. बुक तो हमारे पास है ही. खैर पहले नोट्स में से पढ़ लेते हैं बेटा. 5th पेज. ब्रूटस कहता है, व्हाट डज दिस शाउटिंग मीन? ये इतनी आवाजें क्यों आ रही हैं? आई एम अफ्रेड द पीपल आर गोइंग टू चूज फॉर देयर किंग. कैशियस कहता है, यस. डू यू फियर इट? देन आई थिंक यू डू नॉट वांट इट टू हैपन. तो ऐसा लगता है कि तुम नहीं चाहते कि वो किंग बने. और बेटा ब्रूटस की स्पीच देखो. I would not Cassius, but I really love him. मैं नहीं चाहता, ये बेटा कॉन्ट्रास्ट है ब्रूटस और कैशियस में. मैं नहीं चाहता कैशियस मोनार्क बने, राजा बने, पर मैं सीजर को बहुत प्यार करता हूँ. Why are you keeping me here so long? What do you want to tell me? तुम मुझे क्या बताना चाहते हो? If it is anything for the common people's good on one side, बेटा ये वाला तो अभी हमने पढ़ा हुआ ही नहीं है. मैं ये तुम्हें नोट्स भेज दिए हैं और फिर मैं तुमसे आगे वाला ही पढ़ा रही हूँ. नो 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 बेटा, अभी तो हम पढ़ेंगे. वी विल नॉट रीड इट नाउ. अभी मैंने बुक में से ही पढ़ाया नहीं है. बुक ही निकालो बेटा पहले, और बुक में हम आ जाते हैं पेज नंबर 28. बेटा पेज नंबर 28 से पढ़ना है. जो नोट्स में से पढ़ना है वो उसके बाद पढ़ेंगे. अभी हमने पढ़ लिए, पढ़ना नहीं है. पेज नंबर 28. और बेटा ये कैशियस का इतना लंबा वाला स्पीच था, वो कल हमने पढ़ा. और आज ब्रूटस कहता है, व्हाट मीन्स दिस शाउटिंग? ये लोग क्यों चिल्ला रहे हैं? आई डू फियर द पीपल चूज सीजर फॉर देयर किंग. कहीं ऐसा ना हो कि उसको राजा बना दे. कैशियस, ए वाई, ये डू यू फियर इट? बेटा ए वाई का मतलब यस. डू यू फियर इट? क्या तुम्हें डर लग रहा है? देन मस्ट आई थिंक यू वुड नॉट हैव इट सो. बेटा यू वुड नॉट हैव इट सो का मतलब यू डू नॉट विश दिस टू हैपन. और मुझे लगता है यू डू नॉट वांट हिम टू बी द किंग.
मुझे लगता है कि तुम भी नहीं चाहते कि वो राजा बने। ब्रूटस कहता है बेटा, आई वुड नॉट कैशियस, आई डू नॉट वांट दैट सीजर शुड बी द किंग, yet I love him well, पर मैं सीजर को बहुत प्यार करता हूँ, सीजर इज माई फ्रेंड, but wherefore do you hold me here so long? Why do you ask me to be here? Why have you kept me here for such a long time? Why Cassius has asked Brutus to be there? Brutus is unable to understand. What is it that you would impart to me? बेटा, impart का मतलब want to tell. वो कौन सी बात है जिसको तुम बताना चाहते हो और मुझे यहाँ रोका हुआ है? If it be ought, बेटा ought का मतलब anything towards the general good. जनरल का मतलब बेटा जनरल पब्लिक, गुड का मतलब हो गया फॉर देयर वेलफेयर। और बेटा वो कह रहा है इफ एनीथिंग इज रिलेटेड फॉर द कॉमन वेलफेयर, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, इफ एनीथिंग तुम मुझे बोल रहे हो जो कि वेलफेयर है, वेलफेयर का काम करेगा, भला करेगा लोगों का, सेट ऑनर इन वन आई एंड डेथ इन द अदर। बेटा तो मैं ये दोनों चीजों को एक इक्वल देखूंगा। ऑनर का मतलब रेस्पेक्ट और डेथ। तो बेटा फॉर द सेक ऑफ द वेलफेयर ऑफ रोमन्स आई एम रेडी टू डाई, मैं मरने के लिए तैयार हूं। हाँ वर्धमान बेटा बोलो। Ma'am, please again tell the meaning of impart. इम्पार्ट का मतलब लिखो बेटा, वॉन्ट टू टेल, शेयर विद मी। And if it be anything related to the welfare of the common people, तो कॉमन पीपल के वेलफेयर के लिए मैं इवन ब्रूटस सेज दैट ही इज रेडी टू डाई, ब्रूटस इज रेडी टू डाई फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। सेट ऑनर इन वन आई एंड डेथ इन द अदर। इफ ब्रूटस सीज, बेटा ऑनर का मतलब द रेस्पेक्टेबल वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल and death while doing the welfare of the people, he will die for the welfare of the people. तो बेटा फॉर द कॉमन वेलफेयर, लोगों की भलाई के लिए अगर रेस्पेक्ट मिले तो भी और अगर डेथ मिले तो भी, ही इज रेडी टू डू एनीथिंग। दैट इज द मीनिंग ऑफ द लाइन। एंड आई विल लुक ऑन बोथ इनडिफरेंटली, इनडिफरेंटली मतलब इक्वली, बेटा impartially, unbiased, तो he will look at the respected life as well as the death in the same. For let the God so speed me as I love the name of honor more than I fear death. Beta, for allow the God so speed me. Beta speed matlab favor me, as I love the name of honor more than I fear death. And God should see to it, gods must notice it, that I have no fear in death. I am not afraid of death as much as I am not interested in getting respect. For Brutus, both the things are same. Either it is the death or it is the respected life, honorable life. It's one and the same thing. For the sake of the people, is ready to do either of the two. Now, what Cassius says, you see, page number 29 is whole dedicated to Cassius. तो बेटा कैशियस की स्पीच पूरा 30 पेज तक जा रहा है, इतना लंबा, और हम इसको कर रहे हैं अभी। I know that virtue to be in you, Brutus. Virtue means quality. अभी ये वाला एक्सट्रैक्ट दे देंगे कैशियस का, और फिर तुमसे क्या पूछेंगे मालूम? फिर तुमसे पूछेंगे एक बात बताइए, विच क्वालिटी इज कैशियस टॉकिंग अबाउट? तो आपको वो याद रखना है, कैशियस इज टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी दैट फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल Brutus is going to treat death and honor equally. He is not to be shaken by either of it.
Beta, I know that virtue to be in you, Brutus, as well as I do know your outward favor. Favor means looks. मुझे तुम्हारी क्वालिटी पर इतना यकीन है. As I can see your face, so I can see your face, and I am so confident this is your face. Similarly, I am confident of your qualities. Well, honor is the subject of my story. So what Cassius is telling him is honor. तो वो कहता है मैं तुमसे जो बात करूंगा वो भी रेस्पेक्ट की ही बात करूंगा, ऑनर की ही बात करूंगा. I cannot tell what you and other men think of this life. बेटा, तुम क्या सोचते हो आजकल जो हमारी लाइफ है उसके बारे में, या फिर बेटा बाकी लोग क्या सोचते हैं अबाउट द लाइफ. देखो, दिस लाइफ का मतलब लाइफ ड्यूरिंग दीज डेज. बट फॉर माई सिंगल सेल्फ, इसका मतलब बट फॉर माई सेल्फ. इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, I had as lief not be as live to be. बेटा, as lief not to be का मतलब I will prefer not to live. I do not want to live. I do not know what other people think about life in today's world. I do not know what Brutus you think about the life in today's world. But I will prefer not to live in awe of such a thing as I myself. बेटा, in awe का मतलब in fear of. Such a thing, thing का मतलब लिखो बेटा man, creature, as I myself. See, Cassius does not want to live. Why Cassius does not want to live? Because according to him, he says that he does not want to be afraid of any man in the world. And in today's times, people are afraid of बेटा a single man. हाँ दर्श बेटा, आप बोलेंगे. Ma'am, I can't understand, ma'am, what Cassius is trying to telling Brutus. Ma'am, in the 80, ma'am, the previous page 28, ma'am, 85, 85th line. In that line, you do not know what he wants to say. That line. Yes, ma'am. If it be ought toward the general good, okay, this line means that Brutus is ready to do anything for the welfare of the people. Brutus is not concerned whether he gets respect after doing the welfare or he gets death after doing the welfare. For the sake of the welfare of the people, लोगों को भला करने के लिए, अगर in return उसको respect मिलेगा तो भी, in return अगर उसको death मिलेगा तो भी, he is not going to stop himself from doing good for the people. Have you got Darsh? Have you got this line? Yes, ma'am. Yes, ma'am. This is the essence of the line, अलग अलग तरीके से. आयम आप बताएं बेटा कौन सी line? Can you please tell me the meaning of in awe? In awe. In awe means you write down in beta fear of. Okay. So Cassius does not want to live a life which is so much afraid of a man who belongs to his own category. Why he should be afraid of Caesar? So he is indicating towards Caesar. हाँ वर्धमान आप बताएं बेटा. Yes. Ma'am, please again tell the meaning of thing. Ma'am, in the line, in awe of such a thing as I myself. In fear of such a thing. Such a thing का मतलब लिखो बेटा such a creature, such a man as I myself. So in this line he wants to say that he does not want to live in fear of Caesar because Caesar is also as he himself was. There is no difference between Caesar and Cassius. Why Cassius should be afraid of Caesar? That he means. I was born free as Caesar. So beta similarities बता रहा है. So Cassius was born free, Caesar was born free.
So were you. Brutus was also born free. We both have fed as well. So we both have eaten food as Caesar eats. And we can both endure the winter's cold as well as he. And as much as he is affected by winters, we are also affected by winters. So when we three are same in everything, why one of us is placed so high? That is the question. For once, now he proves what he wants to prove, that Caesar is no better than he is. For once, upon a raw and gusty day, beta, during a raw means cold day. It was a cold day. I will give you an example, Brutus. Listen to me. It was a cold day. Gusty day means windy day, stormy day. The troubled Tiber. In river Tiber, there was a storm. Shaffing का मतलब raging with her shores. बेटा her shores का मतलब bank. So personification use किया है. River Tiber was in anger. The water was the beta in storm. It was a stormy weather. The water was not in the shores, not inside the banks. किनारों के अंदर पानी नहीं था. It was overflowing. Beta, Caesar said to me, dearest thou Cassius, do you have the courage, Cassius? Now leap in with me into this angry flood. Jump karo इस पानी में. इस बेटा angry flood का मतलब stormy waters में. And swim to your yonder point. Yonder matlab that point. And we will swim. Do you have the courage to swim till there? Upon the word, beta, as he spoke, accoutred as I was. Beta, accoutred ka matlab fully dressed. So Cassius said that when Caesar asked him to do so, he was in the proper dress and he did not think about anything. He dived into river. I plunged in, I dived in and bade him follow and asked Caesar to follow. Picha karo mera. So indeed he did. And Caesar came behind me. Caesar was swimming behind me. The torrent roared. And beta, the torrent means the strong waves were making sound. And we did buffet it. Beta, buffet ka matlab we were struggling against the stormy waves. How Vardhaman beta? Mom, that's the phrase upon the word mean as soon as. He Yeah, said beta. that. Yeah, beta. Upon the word means as soon. We did buffet it, and they both were struggling against the stormy waves with lusty snooze. Beta, lusty means energetic. Snooze का मतलब muscles. Throwing it aside. तो जब हम swimming करते हैं तो बिल्कुल strong muscles चाहिए. And throwing the water aside. And stemming it. Beta, stemming का मतलब pushing against. With hearts of controversy. Beta, hearts of controversy means competition. With full competition against the stormy water, they were swimming. But ere we could arrive the point, beta, ere ka matlab before they could reach to the point decided by Caesar, beta, the point proposed, decided, Caesar cried, help me Cassius or I sing. I as Aeneas, बेटा एल्यूजन यूज हुआ है. एल्यूजन का मतलब जब किसी और बुक का रेफरेंस यहाँ दिया हुआ है तो वो कहता है और मैंने सीजर को ऐसे बचाया जैसे इनीस ने बेटा बचाया था अपने फादर को. देखो इनीस बेटा ही वॉज द फाउंडर ऑफ रोम. उन्होंने रोम बनाया था. एंसेस्टर माना जाता है इनीस को ऑफ ऑल रोमन्स. और बेटा ये जो इनीस हैं देखो लिखा है अवर ग्रेट एंसेस्टर. सो ऑल रोमन्स रेस्पेक्टेड इनीस. तो कहता है अपना कंपैरिजन इनीस से करता है कि जैसे इनीस ने बचाया था बेटा अपने फादर को
वैसे ही मैंने भी बचाया सीजर को फ्रॉम ड्राउनिंग. I, as Aeneas, our great ancestor, did from the flames of Troy. और बेटा ट्रॉय जब पूरा शहर जल रहा था, अपॉन हिज शोल्डर, तो इनीज ने अपने कंधों पे द ओल्ड एंचाइसिस बियर, बियर मीन्स कैरीड, बूढ़े फादर एंचाइसिस को बचा के निकाला था, वैसे ही मैंने उसको बचाया. सो फ्रॉम द वेव्स ऑफ टाइवर डिड आई द टायर्ड सीजर. तो वो थके हुए सीजर को मैंने बाहर निकाला. Ma'am, एंड हाँ दर्श बेटा, हाँ बेटा, Troy was a city. हाँ ट्रॉय वॉज द सिटी बेटा, ट्रॉय वॉज द सिटी. नाउ एंड दिस मैन इज नाउ बिकम अ गॉड, और अब ये गॉड के जैसा बन गया है. एंड कैशियस इज अ wretched क्रिएचर बेटा, अ पुअर क्रिएचर, और मैं उसके सामने एक इतना पिटिएबल क्रिएचर के जैसा हो गया हूँ. वो सीजर जिसे मैंने बचाया अब वो कहाँ पहुंच गया, और मैं एक पिटिएबल क्रिएचर हूँ. एंड मस्ट बेंड हिज बॉडी. एंड शुड कैशियस बाउ डाउन बिफोर सीजर. व्हाई कैशियस शुड बाउ डाउन? इफ सीजर केयरलेसली बट नॉट ऑन हिम. बेटा इफ सीजर लुक्स एट कैशियस casually, very normally, then also Cassius has to bow down. Why? ऐसी क्या खास बात है भाई उसमें? He had a fever. Second example. एक बार उसको बुखार हो गया था. He was in Spain. And when the fit was on him, बेटा when he was shivering, बुखार में जब वो कांप रहा था, I noticed how he did shake. Like a common weak man he was shivering. कमजोर आदमी जैसे शिवर करता है वैसा वो शिवर कर रहा था बुखार में. इट इज ट्रू, दिस गॉड डिड शेक. ये जो आज भगवान बन के बैठा हुआ है ना, सो मच हाई पोजिशन, ये कांप रहा था. हिज कावर्ड लिप्स. बेटा यहाँ कावर्ड का मतलब लिख लो जरा बेटा, जस्ट लाइक अ कावर्ड पर्सन, डिड फ्रॉम देयर कलर फ्लाई. और बेटा इतना ये पूरा ऐसा अफेक्टेड था फीवर से कि द कलर ऑफ हिज लिप्स वर नॉट देयर. इतना पेल हो गया था, वीक हो गया था, येलो हो गया था. And that same eye, page number 30, and that same eye whose bent, बेटा whose look doth awe the world. awe का मतलब frighten. और वो आंखें जो आज दुनिया डरती है सीजर की जिन आंखों से, did lose his luster. बेटा its shine. उस दिन उसकी आंखों में बुखार जब था तो बेटा उसमें कोई शाइन नहीं थी उसकी आंखों में. I did hear him groan. He was crying in pain. और बेटा बुखार में ऐसा शिवर कर रहा था और रो रहा था बेटा दर्द के मारे बुखार में. yes, and that tongue of his. बेटा tongue of his का मतलब the speech. और वो स्पीच जिसको सुन के सब लोग डर जाते हैं, वो बेटा उसकी आवाज ऐसी हो गई थी पतली सी, और बेटा ऐसा बेचारा रिक्वेस्ट कर रहा था. And that tongue of his, and that tongue of his that bade the Romans. बेटा that asked the Romans. जो बेटा रोमन्स को स्पीच देते हैं, मार्क हिम. बेटा नोटिस करो, राइट हिज स्पीचेस इन देयर बुक्स. और रोमन पीपल सीजर की स्पीचेस को ध्यान से सुनते हैं, लिखते हैं बेटा, रिकॉर्ड करते हैं उसकी स्पीचेस को. एलास इट क्राइड. वो ही आवाज क्राई कर रही थी बुखार में. और क्या क्राई कर रही थी? गिव मी सम ड्रिंक टिटनस. बेटा टिटनस का मतलब हो गया, फिर वो उसका फ्रेंड है, अरे टिटनस मुझे दवाई दे दो, ऐसा बोल रहा था बेटा. एज अ सिक गर्ल, जैसे कोई लड़की कराहती है बुखार में. ये गॉड्स, ओ माय गॉड, इट डॉथ अमेज मी. आई एम सो कंफ्यूज्ड, आई एम सो सरप्राइज्ड. A man of such a feeble temper, beta such a weak nature, should so get the start of the majestic world. और इतना वीक इंसान इस वर्ल्ड का बेटा लॉर्ड बन के बैठा हुआ है. so get का मतलब succeeded.
बेटा द स्टार्ट ऑफ द मेजेस्टिक वर्ल्ड, इसका मतलब द पावर ऑफ दिस वर्ल्ड, एंड दिस वीक मैन हैज गॉट द पावर ऑफ द वर्ल्ड and beat the palm and bear the palm alone. Beta, bear the palm alone का मतलब he has to get the beta crown made by the palm leaves and he is going to be the king. इसको पहनाया जाएगा वो मुकुट राजा का, इस weak man को. बेटा that is the why he should be the only person who can be the leader of the Romans. Why? What is there so special? ये बोल रहे बेटा. और बेटा फिर से आवाज सुनाई देती है. कल फिर क्लास होगी. आई एम एवरी डे टेकिंग शॉर्ट क्लासेस फॉर यू. तो कल फिर क्लास होगी बेटा, फिर हम ये आगे का पढ़ेंगे और थोड़ा सा डिफिकल्ट है ही दैट यू नो, तो हम थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं. अब नोट्स निकालो. मैंने आज जो पीडीएफ तुम्हें भेजा था बेटा, उसका आप 5th पेज निकालो दैट वी आर रीडिंग.